आज भी हम ERP की तरफ जाते हैं, हम Microsoft Dynamics 365 की बात करें, Oracle की बात करें, SAP की बात करें, e-commerce में Shopify की बात करें, Salesforce की, Magento की, तो everybody runs there. Businesses grow करते हैं. Needs of the business is also growing. When you grow and you have a big targets to achieve, you need the technology that supports the whole processes. You need to know your objectives, what you want to achieve and where you want to go. किस एरिया में डिलीवर कर रही हैं, आपका अपना वेयर हाउस फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पे है, उसके साथ ये सारी डायनामिक्स कनेक्ट करके फिर बनती है लॉजिस्टिक पार्टनर की इक्वेशन. पुरानी कंपनियां हैं, उनके पास मसल है, वो बैठे हुए हैं, बट दे आर नॉट इम्प्रूविंग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कोई भी आपने रेलेवेंट फील्ड चूज करनी है. द फर्स्ट थिंग इज हैव योर फोकस, सेकेंड इज plan it, third stick to your plan. It can sometimes hurt a lot. Have patience. Patience is very key. And the last most important is hard work. Put your effort. Do work with passion. Don't do work if it is the work for the sake of the work. If you love it, if you want to do it, live the work and you'll be there. Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I'm the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by FutureFest. Today we have a guest with us who's like an elder brother to us and who's been working in the industry from a very long time. And he has set so many examples in the industry. He's related to the networking, IT, e-commerce, you name it. And he's been part of this. And he has very valuable information and experience to share with us today. None other than Syed Talal Hassan, CIO of Sapphire Retail Limited. अस्सलाम वालेकुम तलाल, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक. सर बहुत सारी चीज़ें आज आपसे हम सीखेंगे, सुनेंगे. एंड आई होप के जितने लोग भी ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट और सुन रहे होंगे, उनके लिए यू विल प्ले एज अ रोल ऑफ एन इंस्पिरेशन लीडर and expertise and experience. Inshallah Ta'ala will begin from the very beginning. Kindly आप मुझे ये बताएं अपना पूरा नाम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, where did you start the journey, how did you enter into the industry, and what were the accomplishments and achievements and throughout your journey, sir, please. It's quite a questions, but yes, definitely, yes. It's a very, I think, let's take it very simple. I did my education. It's a very simple education background. I completed my master's in information technology. I started my journey in the professional career in about 1999. And the initial startup was with the industry of networking security infrastructure and evolved towards the industry requirements. And myself, I also learned a lot. By 2012, I joined Sapphire Group and then learned the ERP and other technologies. In 2014, when Sapphire Group launched their brand as a Sapphire Retail, then we started, myself entered the industry and started learning the retail part. In 2015, that was where the e-commerce journey has begun for us, and it's a great learning. A lot of challenges. Still, we are learning. We are not there yet, but I think over the past so many years, we have gone through a roller coaster, and still trying to achieve what we call as an ultimate customer service standard. So that's what I would say. Achievement would be a very relative statement, but I would say as a part of a team, we were able to deliver a good stuff in the industry. Very good. But, when I see your journey, I quite get inspired in the sense कि जब आपने networking से जहाँ से start लिया, उस time networking आज भी, लेकिन उस time networking, was a very big thing because nobody had the knowledge of this. I remember कि my elder cousin made a Hotmail ID for me in 1999-2000, I believe, when I was studying. तो उस टाइम एक जीमेल बनाने के लिए या एक हॉटमेल अकाउंट बनाने के लिए भी जिसको बोला जाता था, तो पीपल यूज्ड टू से इज कंप्यूटर जीनियस. मैंने वो काफ़ी लोगों ने, आई थिंक वो जर्नी थी आप जैसे लोगों ने जिन्होंने 1990 लेट 1999 और 90s में और अर्ली 2000s में जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस की डिग्री से स्टार्ट किया, तो ऐसे लोगों ने हमारी हर बंदे की फैमिली में इंस्पायर्ड किया उस यूथ को जिसने जाके कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया.
बिकॉज आई थिंक लोग उस टाइम बोर हो चुके थे बायोलॉजी से और फिर लोगों ने कंप्यूटर साइंस लेना शुरू किया, या वो कोई नई चीज़ थी इसीलिए। तो तब भी आप माशाल्लाह नेटवर्किंग में थे, और आज जब इंडस्ट्री अभी कोविड के बाद या ई कॉमर्स में पाकिस्तान में जब से ई कॉमर्स का बूम आया इंडस्ट्री में, तो माशाल्लाह आप इसी तरीके की जो है ना अचीवमेंट्स में आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर एज वेल दैट यू आर पार्ट इट, यू फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ first comers and bringing new trends and getting evolved to it. So I want to ask you कि आज भी आप नेटवर्किंग करते हैं या नहीं करते हैं, और नेटवर्किंग में शेयर अ स्टोरी ऑफ नेटवर्किंग विद अस, एंड देन विल कम टू द सैफायर पार्ट एंड द ई कॉमर्स पार्ट, बिकॉज आज के टाइम में लोगों को नेटवर्किंग से ज़्यादा अब लोगों को इंटरेस्ट आता है ई कॉमर्स में। बिल्कुल सही. Just to correct the understanding. So my studies and my professional career was at parallel. So till my graduation, I never studied computer science. It is always like I learned on the ground, I deliver it, and then I started learning it. Learning in a sense that formal education to complete that. So it's like, doing the Microsoft certifications were very famous at that time. Cisco certifications were very booming at that time. So I have my doing my studies at the same time. I'm working at the same time. Yes. So my learning journey was a little bit different in the sense, formally I learned things later in a formal education, but I practically learned on ground, and then I take it from there. Now coming to your point regarding networking. Yes, networking was or is still quite a bit challenge. I feel that it has evolved the industry when the whole cloud thing came into the play. So one of these biggest thing which I can take as a pride, that Microsoft 365, the cloud premises on cloud premises for the business users, everybody industry was struggling with the on-prem server. लोगों को email server नहीं चल रहा है. So that is there. I feel I played a vital role over there in the local industry. Then there is another part of the networking which people struggles a lot. The internet management, the bandwidth management. True. Where you have every day the needs are increasing, especially the whole industry is changing, be it manufacturing, be it any type of the industry, traveling, or any industry, you name it. Even the IT is the most demanding industry. But once you have so much demand of the internet and everybody is so much connected, then there's a certain structure has to be in place. That structure will enable you for 2-3 things. People initially was struggling that we don't have the availability of the service. Then the problem gets solved. The availability of service is there. The next problem came into the play is how to manage that. So many users, so many devices. Then solutions came into play, and we, or myself, or a lot of people in the industry, start solving that problem. Then there is a bigger problem came to the play. That is a security part. So once you have internet, you have management, you have firewall, you have everything. Now you have to solve the issue of the monitoring and compliance and security. True. So data to be secured and should be fast enough. The business need has to be achieved. Yeah, once you achieve something, तो बेसिकली ये वही है कि आज 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 1 मिनट में तय किया है, तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू दिस कि वो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, नीचे करना है, और फिर आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, फिर यू सेट अनदर माइलस्टोन. डेफिनेटली जब लाइक अ वीडियो गेम एक part complete and then the other part then the next stage comes into play. Stage comes. So the life keeps on going like this. It's a long process. True. आपके साथ डिस्कस करने के बाद I come up this thing came up in my mind कि नेटवर्किंग की भी अवेयरनेस नहीं है मार्केट में. स्पेशली व्हेन एक ये चीज़ है कि नेटवर्किंग करने वाले भी अपने आप को उस तरह प्रमोट नहीं कर पाते, सेल नहीं कर पाते कि वाई डू, और लेने वाले को भी नहीं पता कि द यूजर डज नॉट, द बिजनेसेस और द यूजर्स और एनीबडी हू वांट्स टू डू द नेटवर्किंग, दे डोंट नो कि at what stage should we do it or why shouldn't we do it and what are the norms to it and what are the checks to it. So I think this is also a domain which we need to discuss, or I didn't find any
अब जिस तरह की ई कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि ई कॉमर्स पे कुछ बिक रहा है और हर बंदे को फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए हर बंदे ने ई कॉमर्स करना है, इधर ऑन द ब्रांड एंड साइड, इधर ऑन द सर्विस प्रोवाइडर एंड साइड। बट किसी को भी मतलब नेटवर्किंग को जब मैं उससे कंपेयर करता हूँ, तो आई थिंक नेटवर्किंग की इतनी अवेयरनेस हमें आज भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ऐसे ही है, क्योंकि आज भी हम ईआरपी की तरफ जाते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 की बात करें, ओरेकल की बात करें, एसएपी की बात करें, ई कॉमर्स में शॉपिफाई की बात करें, सेल्सफोर्स की, मजेंटो की, तो एवरीबडी रन्स देयर। ट्रू। सो मैं आपको बता रहा था कि द बिगेस्ट चैलेंज विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और इंडस्ट्री को ये रियलाइजेशन नहीं है कि जितने भी ईआरपी या कोई भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी फाउंडेशन नेटवर्किंग के ऊपर है। आज networking is not only laying a cables or putting up a Wi-Fi, it is a cloud of infrastructure, be Yes. it any cloud infrastructure, AWS or cloud or Azure or anything. The foundation is still the networking part. If you have the right infrastructure, rightly configured it, then you run any of your business application seamlessly, and then you expect the results. So correct me if I'm wrong, that means कि सफ़ायर की जो भी कंपनी, जो भी ऑफिसेज हैं, सफ़ायर की जो भी रिटेल आउटलेट्स हैं, बेसिकली ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ वर्किंग इन सफ़ायर एंड इन दिस पार्ट, तो अगर तो वो नेटवर्किंग वीक है, तो दैट मीन्स उनका फ्रंट एंड की आपकी सारी जो ऑपरेशंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। Absolutely, absolutely. सो इट्स सफ़ायर का ही पूरा नेटवर्क, जो कि एक सप्लाई चेन, एक फैब्रिक, इन सारी चीज़ों पे, जो प्रोडक्ट पे भी खड़ा है, लेकिन ऑपरेशन को स्मूथ करने के लिए नेटवर्किंग प्लेज अ मेजर रोल। तो जिस नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा था, जिस नेटवर्किंग की आप कर रहे हैं, तो यू ओपन माय आइज वाइड ओपन, कि अगर वहाँ पे कोई भी कोताही है, वहाँ पे कोई भी नेग्लिजेंस है, दैट मीन्स द होल ऑपरेशन is paused or shut down, and that becomes an issue definitely. So you're the man behind it who does this with your teamwork and team effort, definitely. Mashallah, hats off to you कि आपने इतना बड़ा नेटवर्क, और एंड यूजर को प्रॉब्लम ना हो, because networking is down, everything shuts down and people start waiting in the queues, और सारा mechanism जो है disturb हो जाता है। True, true. Mashallah, great. Over the period, we have seen this, since we belong to the same industry, so I'm aware of it. So we'll start discussing it from there. That your achievements, आपने एक लाइन में बोला, but I think ये बहुत लंबी लिस्ट है. What was the reason, and how do you sum it, that आपने you were on one technology, that was Candela, and then you moved to Dynamics, right? So what was the reason behind that, and is it better than the previous services you were using? And how does this add value to your business in Sapphire? And इससे eventually सबको कैसे फायदा हुआ है या हो रहा है? बड़ी अच्छी जर्नी है जी ये भी, और बड़ी इसमें लर्निंग है। Candela is a very good product. It serves the certain objectives of the business. Retail POS में हमारी जितनी भी जर्नी उसके साथ रही है, it is always very good. Businesses grow करते हैं. Needs of the business is also growing. When you grow and you have a big targets to achieve, you need the technology that supports the whole processes. So we were in a disconnected systems. Retail POS is working independently. Financial system was independently. Manufacturing was separate. Then the whole supply chain part is there. So moving away from the Candela to Dynamics 365 was helped a business in a sense that we have now a one complete picture. All the processes are running in one system. And honestly, कोई भी business है वो thrive नहीं कर सकता, succeed नहीं कर सकता अगर उसके तमाम components आपस में they are not rightly stitched together, they are not rightly planned together. And honestly, it beats, be it a product, be it a supply chain, be it a marketing, be it a financials, everything is so connected. It cannot only be the technology, and it cannot only be the certain part of the supply chain of the whole life cycle of the product. So, and third part is very important, which I learned over the years, is the planning. You need to know your objectives, what you want to achieve, and where you want to go. So I learned from my management a lot to always think big and aim for the sky. And then you can even plan for it. Then you can try to push your limits. और फिर जाके आप ये चीज़ें करते हैं. So coming back to your question is, Dynamics really help us having a modern POS system at our retail outlet side. Knowing our customer is one part of it, which we are still evolving in it.
the financials, the supply chain, the procure to pay process, and the networking part again come into play. It's a cloud-based system. It's not very much dependent on IT, a local IT on-site team. So it is helping the And business. इसके अपने servers हैं definitely सारा iCloud के साथ connected है. So that means I was once आदत है मेरी examples देने की. I connected to the movies or somewhere it becomes interesting. I was once watching a movie and उसमें there was a house they were building where they were building a house on the puzzles. So वो घर and one steps in the engineer. The concept was this कि engineer का mind ऐसा था. There was one piece of puzzle जो उसने लगाया वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया. There was one piece of puzzle when he removes the building collapse. So ये 3 चीज़ें आपने बताई हैं. बेसिकली इन 3 चीज़ों के ऊपर कोई भी इदारा या उसके जो लिए हुए डिसीजंस जो उसका मैकेनिज्म है वो उस पर डिपेंडेबल होता है. जिस तरह हमने नेटवर्किंग से स्टार्ट किया, हम नेटवर्किंग से, आईटी से, फिर things that you are providing good, the things you are doing best and providing to your end user is this, that right time पे right decisions हो रहे हैं और R&D भी हो रही है. Because majorly startups fail होने के पीछे reason ये होती है we don't do an R&D. If it's Talal Hassan's idea, okay, he will become the CEO. If it's Umair Arshad who is putting the money into this, he will become the CEO. So we make wrong decisions at the wrong time. So we should make the right decision at the right time about the right product. So then that becomes मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है जी. राइट टाइम और रॉन्ग टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर मी. बट आई थिंक के अल्लाह ताला उस चीज़ की समझ बूझ दे. बिल्कुल सही बात है. बट देखिए आप आई अंडरस्टैंड कि राइट टाइम या रॉन्ग टाइम कुछ भी नहीं होता. वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, इधर योर कंपटीटर लीव्स यू बिहाइंड, देन इट्स अ रॉन्ग टाइम. यू टुक द डिसीजन एंड इफ यू लीव देम बिहाइंड, दैट वाज द राइट टाइम. सो वी कैन नॉट गेज इट. आई ट्रूली अंडरस्टैंड. बट सिंस वी यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बात बोली है कि वी आर अशरफुल मखलूकात. जो द वन हु इज आवर क्रिएटर हैज टोल्ड अस दैट वी आर ऑन द टॉप ऑफ ऑल द creations of Allah subhanahu wa ta'ala. So that means मैं तो ये सोचता हूँ दिन में कि that there is a reason. I think it's the common sense जो आपको हार्ड वर्क, एफर्ट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन एक कॉमन सेंस भी बहुत बड़ा एक रोल फैक्टर प्ले करता है आपकी ग्रोथ में और इन सारे डिसीजंस में. Now we'll start with we'll come back to Sapphire Retail Limited, Sapphire as in Sapphire brand. माशाल्लाह we hear sales आप लोग लेके आ रहे हैं, यानी you not in even technology, बल्कि मैं कह रहा हूँ 360 आप लोग you are setting the benchmarks. इस बार की जो माशाल्लाह आप लोगों की सेल लगी we had there were so many ups and downs, fights, goings on, brawls, crawls, ये वो सारा कुछ चल रहा था. अब what is the how do you plan these type of events, and before you plan do you expect this type of result or not? And if you expect those type of results, so Sapphire as a brand is it's equipped enough to handle the traffic on the website, handle the traffic on the retail stores. How do you manage all this, and how do you plan, obviously? I think that's our key strength of Sapphire as a brand To deliver. to deliver, and I would say that's the right people, the right team collectively make the decision, and the top management, the lead of the whole brand, his vision, and the people on the second lead, people like me, and there'll be a lot of other stakeholders, which comes together and they make sure that we deliver. Coming to that part, G, regarding do we plan? Yes, no doubt. We plan a lot. We plan for the traffic. We plan for the website. We plan for our retail in brick and mortar stores. We have an excellent team on our retail side as well. It is so. I must say, sorry, patient team है आपकी. Because मैं खुद Sapphire का crazy, मेरे घर की जो ख्वातीन है ना, crazy customers है Sapphire की. And इतनी ख्वातीन की under one umbrella घर में एक खातून नहीं संभाली जाती, और ये इतनी सारी ख्वातीन को जो है देख रहे होते. Sorry for interrupting, but yes, true, patient आपकी टीम बहुत अच्छी. No doubt जी. इसमें मैं कहता हूँ जो हमारे retail outlets पे the actual army who is running the whole show is our people standing on the floor, on the outlets, that they are the face of the Sapphire. They present us. They can translate the brand's image into the customer service. People coming and making the good experience at the store. So I always admire them a lot. It's a very very tough job. It seems very easy. हमें लगता है कि वेब स्टोर या ई स्टोर चलाना
has lot of challenges, but I believe उनके challenges बहुत ज़्यादा हैं, और the way they handle it, it is remarkable job. So yes, हमारी planning होती है, we plan a lot, every event where it is planning starts ahead, before like lot of before time, and फिर अल्लाह ताला का शुक्र है जी, हमें एज अ ब्रांड जो रिस्पॉन्स कस्टमर से आता है, वो जो एफर्ट चल रही होती है एज अ होल टीम, और मैं इस टीम में आई स्टार्ट विद द प्लानिंग टीम एंड द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टीम, द फिनिश गुड टीम, द सप्लाई चेन टीम प्लेज द रोल जो नज़र नहीं आता उस तरह, लेकिन वो मेक श्योर करते हैं. वी हैव, आई वुड से इंडस्ट्रीज बेस्ट supply chain team we have. माशाल्लाह. The category heads, the product category heads, they are playing such a beautiful role. The marketing team, the creative part, they all come together, we all sit together, we plan it and then we execute it. But at the same time, जैसे आपने कहा कि हमारे रिटेल आउटलेट्स के ऊपर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या हो गए, हम कभी नहीं चाहते, बट ये कि ट्रैफिक इस तरह आती है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है हमारे ब्रांड के ऊपर, कि people are coming like crazy, and because of the product, because of the customer service, because of the experience, that goes same to the website. हम जी स्टोर पे भी जिस तरह हमारी, we have a very I would say right word which is difficult to, but the X team जो कि हमारी डिजिटल साइट की है, e-commerce की टीम, be it merchandising, the product team, the digital marketing team, they all work together, and the way they plan is the whole UI, UX, the customer experience. So, and then there comes a tech part. फिर उसके बावजूद I think हमें we always get more traffic, we always get more conversion. Alhamdulillah, we would like to keep it the same way, और हम चाहते हैं कि और grow करें. We have a very huge बिल्कुल, ambition. इंशाल्लाह ताला. I wish you best of the luck. I wish Sapphire brand best of the luck. Actually, there are so many reasons behind this success. One of the big reasons is end users, customers' experience and belief and trust on the brand. I have noticed this since I can passionately mention these words because I'm a customer of Sapphire as well. I use men's, मैं men's perfumes भी ले रहा होता हूँ, fragrances भी ले रहा होता हूँ. Recently, I'll mention this one product के इवन के वो मेरे बेटे से टूट गया, तो I was very angry. Explorer एक आपका, yes, Explorer एक आपका है, very good. हालांकि not everybody buys fragrance from brand जो कि fabric driven होते हैं, जो कि product driven होते हैं. लोगों को लगता है just for the sake of upsell या cross sell के लिए ये products बनाए, which is a marketing strategy as well, लोग करते भी हैं. लेकिन yeah, you have achieved and completed the phases of the trust. That is the reason कि customer, I think Sapphire के लिए, आप customers के लिए ये matter नहीं करता, because back of the mind they know this, कि they will deliver it, the product is good, if there is something wrong, the services and the policies are so accommodatingly that that will be part of it. अभी जो आपने पूरी journey बताई कि there are so many departments and people involved in the success of this, I truly agree. Or mashallah, hats off to your management as well, those who are playing a role of good thought leader and as an inspirational leader to the people, those who are managing the Sapphire's whole infrastructure, that during these sales, the people might not be going home for a couple of days, couple of weeks as well. You might be there for a couple of days. I've heard this, I've seen this. तो एंड दिल से लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो दिल से काम कर रहे होते हैं का मतलब ये होता है कि इदारा बहुत अच्छा है, इदारे की लीडर्स बहुत अच्छे हैं, एंड द होल फोकस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द ब्रांड. लास्ट पार्ट जो आपने मेंशन नहीं किया, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ. सेल्स भी, ट्रैफिक भी आ गई, सेल्स भी आ गई, सप्लाई चेन भी आ गई, सारा कुछ आ गया. द बिगेस्ट चैलेंज नाउ इज बिकॉज वहाँ पे लो लेवल, लो कैटेगरी की वो एक लेबर यूज़ होती है, जिसके ऊपर ब्रांड का पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलाई कर रहा होता है, एंड दैट मोस्टली दैट पार्ट इज आउटसोर्स एज वेल, बिकॉज यहाँ तक की जर्नी तो इनसोर्स थी. यू कैन कंट्रोल देम. आई वुड वी वुड लाइक टू हेयर अबाउट द लॉजिस्टिक्स के सेल्स आ गई, सेल आपके पास आ गई. व्हाट इज़ योर मैकेनिज्म, व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट, कि जो ऑर्डर्स लैंड होते हैं उनको कितने दिन में डिलीवर किया जाता है, कैसे डिलीवर किया जाता है, उसमें क्या परेशानी फेस होती है, व्हाट आर द चैलेंजेस, and what have you accomplished and over the period of time with terms to logistics? Logistics. Yes, please.
quite a journey. Yes. I'll start with this. It's still a biggest challenge Yes. in e-commerce industry. हम as a brand, जिसमें मैं I would just explaining the retail outlet people as the face of the brand. इसी तरह the tough, the most difficult work is to deliver the orders and coordinating with the logistics partner. वहाँ पे जो हमारी टीम warehouse में in order management, the way they work, yes, there is a whole lot of journey from the tech part. हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक अब तक आ गए हैं. Still अभी बहुत बड़ा गैप. इसमें अगेन सबसे बड़ी जो मॉनिटरिंग है, सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट में. सैफायर में ऐसा नहीं है कि आप सप्लाई चेन के हेड हैं तो आपने सिर्फ आपने देखना है कि ऑर्डर कितने दिन में डिलीवर कमिट किया हुआ हमने कस्टमर को. सो लेट्स से हमने कहा 2 to 3 days में जाएगा, 7 days में जाएगा. सही है. International. Yeah, whatever the better is that, yes. As an organization, we all chase to customers' commitment. Hamaरी, and this goes from top CEO till, the CEO monitors everything so closely that the whole team is on toes and they are working in sync to make sure that happens correctly. That's why what we are achieving today. But the chief operating officer in our organization, after the CEO, he has a very good eye. I really learn a lot from him. So as a brand, हमारी फिर warehouse management की टीम, ये सब काम तो हो जाता है जो कि हमारे कंट्रोल में है. जब आती है लॉजिस्टिक्स की बात, Yes. लॉजिस्टिक हम सप्लाई चेन को हेड को इसलिए क्रेडिट देते हैं कि वो किस लॉजिस्टिक को कब चलाना है, कितना चलाना है और कौन से इनफ्लक्स में विच वन इज परफॉर्मिंग बेटर, एंड ही हैज़ एक्सलेंट माइंड इन दैट. एंड इसमें यस टेक्नोलॉजी भी रोल प्ले करती है, Yes. बट यू हैव दैट विजन, यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन डू इट. लॉजिस्टिक पार्टनर इन पाकिस्तान किसी का भी नाम ले लें, इट्स लाइक मैं इसको कंपेयर करूंगा फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से. आज भी पाकिस्तान में हमें जैसे इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम है कि देयर इज़ नो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इंटरनेट. ये ISP में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ एरिया में अच्छा है और कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं है. इसलिए आपने सही जगह लाके कंपेयर किया, क्योंकि अगर गुलबर्ग में ABC is good, then might be right. वाइवेंट में दूसरा अच्छा है, जिसलिए हम जहाँ जाते हैं उन एरिया से लोगों से पूछते हैं. इट शुड बी नॉट लाइक दिस, इट शुड बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीबॉडी. सही है. इसी तरह लॉजिस्टिक्स के अंदर भी आप किस एरिया में डिलीवर कर रही हैं, आपका अपना वेयर हाउस फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पे है, उसके साथ की सारी डायनामिक्स कनेक्ट करके फिर बनती है लॉजिस्टिक पार्टनर की इक्वेशन. उसके बावजूद क्योंकि लॉजिस्टिक साइड के ऊपर वो लोग भी इवॉल्व हो रहे हैं, बाय द टाइम दे आर लर्निंग द इंडस्ट्री चैलेंजेस विच आई थिंक उनको अब तक लर्न कर देना चाहिए. बट स्टिल स्टार्टअप्स आते हैं बड़े पैशन से आते हैं, व्हेन दे थिंक कि यार इसमें बहुत पैसा होगा, बट जब पता लगता है कि काम करना पड़ेगा तो दे लीव इट. ट्रू. बड़े जो पुरानी कंपनियां हैं उनके पास मसल है, वो बैठे हुए हैं, बट दे आर नॉट इम्प्रूविंग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे इश्यूज हैं. नंबर 1, उनका टेक इज सो वीक कि आप प्रोसेस ऑटोमेशन में यू ऑलवेज स्ट्रगल दैट. बट आई एम नॉट सेइंग अक्रॉस ऑल दी लॉजिस्टिक्स, बट ए लॉजिस्टिक का टेक वीक है तो डिलीवरी अच्छी है, बी का टेक अच्छा है तो डिलीवरी बुरी है, and goes on to everything. Proof of delivery is one of the biggest challenge. True. आज की डेट में it should not be a discussion, it should not be a part of our customer service complaints कि कस्टमर कह रहा है मुझे नहीं मिला और हमें स्टेटस मिला हुआ है कि वो मिल गया है, and now the whole discussion goes in between them. And then you need to do the micromanagement. What micromanagement? You are sitting as in brand, आपको जो है फिर you start your own investigation because it's your customer at the end who is complaining. You can't say because the customer is always right. So I truly understand this because we have faced this issue. I've noticed this thing and we have faced the issues in this multiple brands कि या तो कहीं पे टाइमली डिलीवर नहीं होता, डिलीवर हो जाएगा तो स्टेटस रॉन्ग. एंड मॉनिटरिंग दिस थिंग यू might have noticed this कि fake status is update हो रहे थे just for the sake because if a parcel is been picked
अगर कोई पार्सल मूव नहीं हुआ तो उसके ऊपर दे नीड टू पुट अप स्टेटस देयर, सो दे पुट अप द स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी, नॉट रिस्पॉन्डेड, केम बैक। तो इन चीज़ों को माइक्रो मैनेजमेंट, और जहाँ पे 2, 50, 100 ऑर्डर होंगे इट्स फाइन, जहाँ पे मिलियंस में ऑर्डर चले जाएंगे इस तरह। आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ा मुझे फील होता है एज अ गैप कि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। ट्रू। और लॉजिस्टिक्स पार्टनर के पास कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है जी। कंसोर्शियम तो फिर भी बन जाते हैं, फिर भी बन जाते हैं। और आपको बड़े इवेंट्स में अच्छा, उनको मॉनिटर करने के लिए, सजा देने के लिए कंप्लायंस की चीज नहीं है। इसीलिए दैट्स द प्रॉब्लम कि अब डॉक्टर आपने बनना है तो आपने हाँ। लाइसेंस लेना है, आपको Yes. कोई स्टैंड सेट फॉलो करना है। सेट फॉलो करना है, हमें पता है कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स भी मीट करते हैं नहीं करते। ओके फाइन, दे आर रजिस्टर्ड विद एससीसीपी, दे आर रजिस्टर्ड विद दीज इदारास, बट एवरीबॉडी कैन रजिस्टर इट। दैट्स द प्रॉब्लम। मी मेक आज मैंने पैसे लगाए और मैंने लॉजिस्टिक्स बना ली, बट ऐसा नहीं है कि मुझे लॉजिस्टिक्स की कंप्लाइंस है जो पूरी रखनी है। मुझे वो मेक श्योर करना है स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्री सेम जा रहे हैं, और मेरे मर्चेंट के साथ मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, उन केपीआईज को अगर मैं अचीव नहीं कर रहा या एसएलएस ब्रीच हो रहे हैं, तो मर्चेंट के पास क्या राइट है टू हैव समथिंग पेनलाइज टू logistics partner and vice versa. Yeah, true, I agree to that. So please tell me one thing, कि इन इतने सारी लॉजिस्टिक्स के साथ आप काम कर रहे हैं, इन सारी लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने के लिए ओमनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है? तो आर इज सफायर ऑन एन ओमनी सॉल्यूशन और नॉट, एंड इफ इट्स ऑन ओमनी सॉल्यूशन, व्हिच ओमनी सॉल्यूशन इट इज, एंड what role does it play, and what value has that particular omni-channel added and eased your process? ये क्वेश्चन मैं इंतजार कर रहा था कि आप पूछेंगे। मैं रन टाइम ये क्वेश्चन बनाए। नहीं, बिल्कुल ऐसी जी, वी आर ऑन ओमनी। हम लोग जैसे मैंने बताया हमारे पास डायनामिक्स है फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द बेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स गुड। okay, let's go with it. But yes, apart from the joke, we are using Jinko Retail as our order management, as our Omni channel solution. These guys are doing a very good job. मैं उनको बड़े शुरू से जानता हूँ, और अच्छी से we have an understanding and we work together. So आज जब हम लॉजिस्टिक्स की भी बात कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी का जर्नी है, तो आज जिस जर्नी पे हम पहुंचे हुए हैं, आज एक वन ऑफ द की रोल प्ले कर रहा है जिनको रिटेल फॉर कनेक्टिंग द लॉजिस्टिक्स पार्टनर। और जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, हमारे सप्लाई चेन के हेड जब वो बिजनेस रूल्स बताते हैं, जिनको रिटेल उसको इम्प्लीमेंट करता है, और उसकी ऑटोमेशंस के अंदर बड़ी हमें हेल्प होती है। बट जहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्टनर का चैलेंज आता है, वहाँ पे फिर रुक जाते हैं। सो हम डायनामिक्स को भी पूरा लेवरेज कर रहे हैं, इस D365 को विद जिनको, एंड दैट्स द होल सोल्यूशन। शॉपिफाई ऑन द टॉप, देन वी हैव जिनको, एंड देन वी हैव डायनामिक्स, एंड दिस इज आवर करंट जर्नी। दिस इज नॉट द वे वी वांट टू बी, बट दिस इज currently fulfilling our at least you are one step ahead, with right time पे right decision आप लोग ले लेते हैं। वो right time इसीलिए है, जिस तरह हमने आगे डिस्कस किया था, because the decision itself proves to be correct. तो yes, truly I understand. What is the customer what is the customer experience of Sapphire, and for the betterment of the customer experience and in order to enhance it और उसको improvise करने के लिए what decisions Sapphire is taking? The customers हमारे लिए is very important. We want to make a exceptional experience, inspirational experience. What we are trying to do is कि हमने customer को भी any brand should know their customer and should support, should complement as a brand to their lifestyle, as a fashionable brand. कई दफ़ा brands करते हैं कि they start irritating the customers. We are not doing that. We really don't want to do that. आज के करंट टेक स्टैक के अंदर हमें लगता है कि हम अभी वो जो कस्टमर का हमारा विजन है, फॉर द प्रोएक्टिव सपोर्ट एंड द कस्टमर एक्सपीरियंस, हम उस तरफ अब बढ़ने लगे हैं। अभी हम वी आर डूइंग गुड जॉब विद करंट customer service application and the people, but it has a lot of manual things involved. But at the end of the day, we try to be best in the industry, but we wanted to be best in the world. Yes, inshallah ta'ala you are, and you will be, and more success to you. Amen to that. अच्छा, ये in fact we heard this that Shopify ने जो है basically Sapphire की माशाल्लाह traffic, Sapphire के number of orders, Sapphire की sales माशाल्लाह over the period of time इतनी you have set up the benchmark and अपनी record बना के आप लोग breaking your own records माशाल्लाह. तो the Shopify had to, Shopify is a big platform, it's a we must agree to that.
उस लेकिन स्टिल आप लोगों को एकोमोडेट करने के लिए दे हैड टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ द डैशबोर्ड और मे बी सम सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर वी कॉल इट द डेवलपमेंट्स को चेंज करना पड़ा, फीचर्स फीचर्स चेंज करने पड़े। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू द ई-कॉमर्स, यू आर टेकिंग सम डिसीजंस, सो प्लीज काइंडली शेड सम लाइट ऑन दैट। इसमें बड़ा मैं क्विकली जर्नी बताता हूँ जी। वी स्टार्टेड विद Magento community version. ठीक है। We have a problem, we have a challenges. We want to solve that problem. That was the biggest problem was जब भी आप बात कर रहे थे कि इतने कस्टमर आते हैं तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं जी। सो इन इनिशियल डेज हम प्लान करते थे कि 5,000 कस्टमर आ जाएगा तो उसके मुताबिक स्केल अप कर दो। कस्टमर माशाल्लाह 20,000 आ जाता था। तो अब ये शुरू डेज, अब तो खैर अब तो माशाल्लाह ये नंबर्स आप तो वो मेरे ख्याल से skyrocketing. या जैसा वी वर डिस्कसिंग के शॉपिफाई का बेसिकली आया हॉरिजॉन्टल होता है द ऑर्डर व्यू, तो वो आपके लिए माशाल्लाह तरह सैफायर के लिए वो वर्टिकल करना पड़ा। तो इसी तरह वो सारे नंबर्स ग्राफ्स तो मेरे ख्याल से कहीं भी और ही निकल गए ऐसे ही। तो मैं जस्ट एग्जांपल तो हमें वी देन इन द इंडस्ट्री वी वर द फर्स्ट ऑन द Shopify Plus platform. That is their highest biggest platform in the industry. We adopted that and it solved our problem. Shopify is a pretty much good tool. I'm not saying Magento is not. Magento has its own challenges, but yes, Magento is also a good tool. Magento enterprise tool for, again, it depends on the brand and the needs. So Shopify did a pretty job for us. And now we think we have outgrown Shopify Plus. Now we need to take a next step. Again, जो हमारा as a brand vision है, जो customer centric है and inspirational experience है, उस चीज़ों की basis के ऊपर the Shopify is now our next step is towards Salesforce. हमने अब decision लिया है कि अब we are in the phase of implementation. Salesforce में हम order management हो, commerce cloud हो या service cloud हो, जिसमें customer और फीचर्स जिसे हम कहते हैं कि जिससे शॉपिफाई के लिए हम एक स्ट्रगल करते थे कि यार वैसे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बैक एंड इज़ वेरी वीक इन दैट सेंस कि आपको काफ़ी फीचर्स बनवाने पड़ते हैं, काफ़ी एप्स लगानी पड़ती हैं, certain distractions. Yes, it's a closed platform, but they're doing a very good job. Again, फिर it depends on the brand. आज हम जिस नंबर और जिस फिगर पे खड़े हैं, we want to go 20x more, we want to go 10x in the next. Yeah, definitely. So for that you have to take some तो हमें फिर टेक स्टैक वो चाहिए जो बिजनेस नीड्स को पूरा करे और जो हमारे कस्टमर की नीड्स को for some period of time वो आपको उस पे restrictions नहीं हो, because when you're growing, when you're going towards the growth, तो these little small things stops you कि we want to do this, नहीं भी ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो I think माशाल्लाह I wish you best of the luck. I think this is the reason you're going to United States of America today, and I wish you best of the luck, safe travels inshallah ताला। तलाल मुझे ये बताएं कि AI के बारे में AI इवॉल्व हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो और आपका ब्रांड जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंसेस के लिए और उसको बेटर करने के लिए, कस्टमर को एकोमोडेट करने के लिए और उसको सेटिस्फाई करने के लिए सारे डिसीजंस ले रहा है कि आप इतने बोल्ड डिसीजंस भी ले रहे होते हैं, बिकॉज आई truly believe this and understand this since I belong to this industry that it's not easy to take a decision, these decisions, because छोटा ब्रांड होता है, जब छोटे स्केल पे होता है उस तरह के डिसीजंस ले सकता है, बट आप जिस स्केल के ऊपर माशाल्लाह इंडस्ट्री में खड़े में, it's not easy to take the decision. AI क्या रोल प्ले कर रही है सफायर में भी, और सफायर कैसे AI को देख रहा है कि यूजिंग द AI, आर यू यूजिंग द AI और नॉट, इफ यू आर यूजिंग द AI तो क्या फीचर्स आप यूज कर रहे हैं और क्या बेटरमेंट करना चाह रहे हैं उसका अपने एंड यूजर के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए? I think AI is evolving. Yes. In my opinion. Yes. This technology is not totally there. जी हम जैसे RPA प्रोसेस डायनामिक्स के अंदर पावर ऑटोमेट के थ्रू यूज कर रहे हैं जी, हम platforms like Dengage, Insider for personalization for customer we are using with the AI is playing the role over there. जी But I think हमारे लिए जो aspiration towards going Salesforce is one of the AI as well. For Einstein to play the customer, to enhance the customer experience. Yes, people say yes. And removing the manual intervention and the delay to serve the customer. So I think it is very important. It is still evolving, and we believe it is playing a role for any brand or any industry. It's still time to come to see the results of it, and that's why I believe it's still gray area.
it will be there. That's future. That's for sure. That's my point. We will definitely do this thing. There are so many portions which we discussed. We'll have some portions. I would like to request this to you that we will try to. We will definitely invite you a couple of more times so that we will be discussing those particular the topics, and we'll give the time to that. We wanted to get to know you. We wanted to get to know the achievements, but these are very small words, and the journey is very big behind that, because I wanted to basically discuss. On all the things which you are doing in your day-to-day life, but I think after today's conversation, I come up to a decision that we'll try to call you 3-4 more times, जिस पे हम networking पे एक अलग session करें, हम supply chain पे भी करें, because we didn't discuss supply chain. जब आप supply chain को logistics के साथ कंक्लूड कर रहे थे, तो नॉर्मली सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को मेरे ख्याल से ब्रांड्स भी नहीं देख रही होती है, लेकिन आपके केस में वो इसलिए देख रही है कि बिकॉज प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट की सप्लाई भी देनी है, और प्रोडक्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स के हाथ पूरे पाकिस्तान में जब घूम रहा होता है, तो दे वांट टू कीप एन आई के ऑर्डर्स जो बुक हुए में दैट कंप्लीट प्रोसेस. फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, इंशाल्लाह ताला we'll discuss this in the future as well. Please, tell us something. What is the message Talal Hassan wants to send to the youth of today, to the startups of today, and whatever you want to sum it up and tell us about the e-commerce and the youth and startups? They should do this and they shouldn't do this, if it's possible, please. It's a tricky one. Yeah. Message is very simple. And you like to take a tricky one, by the way. Things comes normal and easy for you. That's not Talal Hassan. That's not the Talal. Yeah, that's I tried. You love challenges. I love challenges. So that, I'm trying to throw you one again. एक के बाद एक bouncer देना चाह रहा हूँ मैं आपको. बिल्कुल सही. I think message बड़ा simple है. Work hard. Focus should be very clear. Youth में I feel like that लोग बहुत confuse हो जाते हैं ये buzzwords और terminologies के अंदर, और inspiration या aspiration without even thinking out कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है जी. मैं क्या टेक्नोलॉजी में या किसी भी इंडस्ट्री और कोई भी हो, चाहे वो आपने म्यूजिक बजाना है, आपने आईटी करनी है, आपने सप्लाई चेन करनी है, जी बिल्कुल, कोई भी आपने रेलेवेंट फील्ड चूज करनी है, द फर्स्ट थिंग इज हैव योर फोकस, सेकंड इज प्लान इट, थर्ड stick to your plan. It can sometimes hurt a lot. Have patience. Patience is very key. And the last most important is hard work. Put your effort. Do work with passion. Don't do work if it is the work for the sake of the work. If you love it, if you want to do it, live the work and you'll be there. True. अगर आपने नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है, that is something else. But अगर instead फिर भी आपको ये करना चाहिए. Passion there. We have seen people, those who studied medical, those who studied engineering, but they are doing an entirely different type, especially in the field of e-commerce. When it comes to YouTuber, bloggers, these people, they studied something else, and in some part of their life उनको पता चला कि यार this is the passion. Because एक जिस तरह आपने बोला ना, कोई right time कोई wrong time नहीं होता, इसी तरह आप sometimes you don't know your passion, because हम उस तरह, हमारा culture उस तरह इवॉल्व नहीं है. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में माँ बाप या टीचर्स बचपन से चाइल्डहुड से आपको मॉनिटर कर रहे थे, ओ शिट यार इसका मैथ्स इज गुड, ओ इसका एस्थेटिक्स आर गुड, तो देन दे टेल देन दे ग्रूम द चाइल्ड इन अ वे दैट वो उसे पता चल जाता है कि ये मेरा पैशन है, बिकॉज ये मेरे अंदर से कॉल आ रही है, जैसे वो एपीआई हम कॉल कराते थे, जैसे एपीआई वो जो आ रही होती है. तो यार ट्रू पैशन यही है. हमारे मुल्क में या हमारी कल्चर में काउंसलिंग नाम की कोई चीज नहीं है. Though we use these words, we like to use it, but we don't practice. मैं कर भी रहा हूँ, इसकी काउंसलिंग में कर भी रहा हूँ, बट करने वाले की कौन कर रहे हैं ये नहीं पता. Again ये वही लॉजिस्टिक्स के साथ मैं रिलेट करूंगा, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती. बिल्कुल ये बात है. अगर काउंसलिंग होगी तो यूथ को भी पता लगेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कभी आप मामू चाचू कजन से सुनते हैं और कभी दोस्त को देखते हैं और भागने लग जाते हैं. और आपने जो बात की ना सब्र की, काउंसलिंग वाली सब्र की बात, कि माँ और बाप बच्चे को समझा रहे होते हैं, वो जस्ट फॉर द सेक के पहले प्यार से बात करो फिर मारो वाला कॉन्सेप्ट है. वो एज सून एज 1.5-2 मिनट गुजरते हैं और बच्चा इंटरेस्ट लूज कर रहा होता है और माँ बाप अपना टेम्पर लूज करके वो वी एंड अप देयर के आप बच्चे को मारना शुरू कर देते हो. डेफिनेटली जो है सब्र, पेशेंस, थिंकिंग, रिसर्च, इन सारी चीज़ों से ही इदारे बनते हैं, इन सारी चीज़ों से ही एक अच्छा किरदार बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है, फिर वही इंसान मिल के उस इदारे को बड़ा करते हैं. इंशाल्लाह ताला आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक
for your future, for the future of Sapphire Retail Limited. Immaculate, बहुत अच्छी job आप कर रहे हैं. Safe travels. You're traveling to USA. Come back. We'll sit again inshallah ta'ala. There will be another day. And the बहुत short time था, लेकिन we tried to drain out and pull out as much as the experience and as much as the insights which we could try to take it out from Syed Talal Hassan. So thank you very much.